the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Hungry. The time. I was an ordinary. Mondstadt welcomes you. नंदू तेलुगु गेमर हाय। क्या आवाज सुनाई क्या है? आई थिंक दे रहा है तो चाहिए। और मुझे पता नहीं था कि इससे डायरेक्ट ओबीएस से स्ट्रीम किया जा सकता है। लॉल तो को लग रहा था कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा क्योंकि इसके उस पे 1 पे सब्सक्राइबर नहीं हुए। बट अपेरेंटली यूट्यूब जो है इसको आराम से जो है इस पे भी स्ट्रीम करने देता है। Ad Astra Abyssos. आई डोंट थिंक सो तुम में से कोई जिनसिंग इम्पैक्ट खेलते होगे। Thank you for completing today's commissions. Ad Astra Abyssosk. नेक्स्ट काम है एडवेंचर स्क्वाड। ये कैरेक्टर अपग्रेडन कैरेक्टर का मटेरियल मिला। नहीं कैरेक्टर का मटेरियल काम का नहीं है। माइनक्राफ्ट रात को Ad माइनक्राफ्ट रात Astra को। Abyssosk. Welcome to the adventure. ये अभी तक एडवेंचर कर किए जा रहे हैं। ये भी करने दो मेरे को। ये क्या कर रहा था अभी? अब कोई फायदा नहीं है। ओनली वन थिंग कैसे? मैं तो सुब्रायन गेमिंग जो चैनल है उससे देख रहा हूँ और तुम भी देख रहे हो। वन वॉचिंग कैसे हुआ तब? यूट्यूब को मारना चाहिए। Let the show begin. Welcome to Mondstadt. कैरेक्टर भी अपग्रेड करना था इसका मतलब तो मेरे लास्ट वाला भी लॉक फुल कंसिडरेशन अनलॉक। फ्री वॉचिंग बोला ना मेरे को तो 0 दिखा रहा है ऑब्वियसली। तो 3 की वॉचिंग है इस चैनल पे। 3 की वॉचिंग मतलब तुम मैं और नंदू क्यों है वॉचिंग ही तो जेन्युइन है। लोग भी ये वाला गेम ट्राई करके देख सकते हो मस्त है। फोर की वॉचिंग मेरे को 0 की वॉचिंग दिखा। ये मेरा मोबाइल का प्रॉब्लम हो सकता है। 0 की वॉचिंग पूरा 0। ये वाला चाइल्ड सीक्रेट आर्कियोलॉजी। अबे आर्कियोलॉजी अब ही तो आना था ना। बट दूसरा क्वेस्ट मैं भूल गया कौन सा वाला था। ये वाला हाँ देखा बोला था ना। Let's dance. दिस गेम इन मोबाइल। हाँ मोबाइल में भी है पीसी में
दोनों This में place looks so ordinary. Can we really find anything valuable here? going to watching first road, one watching three, third two. Paimon thinks it looks really grand. I don't mean the scenery, but rather that there should be something out of the ordinary. A big battle did just occur and all, and I don't even know where to begin looking here. Guyan Stone Forest is actually the perfect place to be, if you wish to learn about the gods or the history of the Archon War. Legend has it that Rex Lapis threw spears made of large rock into the sea here, piercing and crushing the Overlord of the Vortex. After many years of wind erosion, those stone spears have turned into the unique rock formations we see now. These mountains were the Lord of Geo's weapons? What we see now is just the part of them that remains. The stone spears hurled by Rex Lapis all those years ago were much greater, both in number and in size. But due to the different angles they landed at, their large centers of mass, erosion by seawater, and years of gravity, many of them have been completely swallowed by the sea. So besides wind erosion, the initial collapsing of the stone spears also played a big part in the formation of Guyan Stone Forest. Well, I have a god Bedwars able to server. fight one so powerful as Rex Lapis was certainly very strong in its own की right. बात है Indeed, शाम को बोलना है ये शाम को जब this is सब where कुछ the खत्म- value lies in research at Guyan Stone Forest. Most of the objects from that time were lost to the sea. But the gigantic waves created by the Overlord of the Vortex have given those sunken objects a chance to see the light of day again. So you're saying that if we look carefully, we'll be able to get very, very rich. I mean, rich with archaeological knowledge and historical value, yes? That's all I seek in life. Well, since we brought so many people, I think it would be best to split up and look. Okay then, I तो will सिर्फ go with पैसे से my मतलब friend है। here. Although I have a smattering of knowledge in various disciplines, when it comes to archaeology, I can't compete with the expert here. Me? What's the matter? This is your profession. Why are you so surprised? I get it. I'll escort him then. Okay. If we find anything valuable or rare, let's meet on the shore opposite from here. My laptop is dead. The That's ancient why my god laptop is probably coming left in behind 9 lots of 9 o'clock. elemental marks. Following them should make our लैपटॉप खराब search हो गया much तुम्हारा तो easier. तुम्हारा सही करने दिया है Go ahead then. Use your elemental sight to look for any marks. I'll protect us. Nice and spicy. Into the wind. खत्म अब सही यहाँ पे एलिमेंट साइड ओह This is टू की वाचिंग चलेगा चलेगा उस चैनल पे 0 की वाचिंग मतलब वो 5-6 की वाचिंग की जगह पे इस चैनल पे 2 की वाचिंग बहुत है the wind knows so many. वाह 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 regrets. खत्म Let's वैसे मैंने dance. गलती किया था वहाँ पे तो मेरे को क्लिक करना था
Guyan Stone Forest is a place where a god was defeated, and its remnants still affect the area to this day. देखिए वासी, अरे तुम दोनों देख रहे हो, तुम 2N देख रहा है, नंदू तुम देख रहे हो, और मैं चैट पढ़ रहा हूँ, उस अकाउंट से भी देख ऑब्वियसली. Smell of treasure. Strange. मारना है, मारना मारना दूसरा. Nice and spicy. You're toast. ये जियो ओपोनेंट्स को मारना इतना खतरनाक होता है ना, मतलब दिक्कत देते, बहुत दिक्कत देते. नहीं ना खत्म हो जाओ. Ready, steady, go! Let the show begin. The frying pan into the fire. Do you know Bulky Star? I know Bulky Star. Bulky Star कौन है? Bulky Star तो यार एलिमेंटल साइड से साइड में क्या फाइट करना है. यहाँ पे आना है. They're gathering together here. But why? See that object in the center? Perhaps it emits the remnant strength of the god. That would certainly attract them. अबे इसे क्यों मार रहा हूँ मैं? पानी के But the hydromimic monsters. I have a contract and must put my personal feelings aside. Go ahead, defeat them, and recover the relic. There is reinforcement. I kill you. Take खत्म. me. One with nature. This is आई end. हाइड्रो मॉन्स्टर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. Nice and spicy. खत्म रे, मरा रे. ये तो कुछ
नहीं Ouchie! Booba, get them! Eat this! Now I'm really in a mood. It's just a stone खत्म slab, खत्म बच but गया its design is quite unique. This ओ should be जल्दी enough मरोगे to garner some हाँ मेरे को भी लग रहा था information. पर बच गया Let's head back. बची गिरो Come on, we can do it. Go, Barbara, go. यहाँ पे तो I didn't see any anime. Which You anime call I need yourself to a see? scholar of archaeology? You can't even recognize this Death or Note? that. What are you good for? Attack on Titan. Attack on Titan We first all के have लिए our ज़्यादा areas of हाई हो expertise. जाएगा Death I Note ठीक already है. tried very hard to explain. Oh, stop arguing. What in the world happened? This girl just keeps bragging about how she's an archaeologist, but she doesn't even know anything about the surrounding ruins. I even know more than her. She left me to rely solely on guessing, experience, to find anything valuable to take back. Ugh, what a waste of time. I've just been researching the god of salt, so I'm not familiar with sea relics. Is that so strange? Nope. And you kept asking about how much Mora everything is worth. Can the value of relics only be measured in Mora? One Punch Man भी अच्छा isn't है. measuring हाँ, their One Punch value in Man भी Mora the अच्छा है. easiest way? This also matches the traditions of Liyue, does it not? Now, calm down. No need to make a fuss. We were able to bring back some intriguing objects. Bro, what about Death Note? I Let's have a heard look. about Death Note. हाँ मैंने बोला तो Death Note देख सकते हो. Oh, अच्छा है Death Note. what a shame. These objects were indeed washed ashore by the Overlord of the Vortex, but they The have Vortex nothing to कौन है? do with the god besides being in the vicinity at the time. The stone slab we found, however, has a mysterious pattern and faint aura of divine power. Perhaps it will be Lucifer, हो useful क्या? for research purposes. Quick, give it to me. Death Note amazing. हाँ Death Note At amazing है. least we didn't come for nothing. The power of the gods, yes! This is good. Oh, but these other objects are certainly worth a little something, right? It should be enough to cover the cost of hiring you. It's all mine. So, it's only valuable for research Tech King, if there hello, are मैं आ remnants of गया. divine कैसे हो power Tech King? in it? Not at all. My quest to uncover the बोलो, कैसे history हो? of the god of salt is because history can tell us about culture and beliefs. But you're just trying to use archaeology to get rich. Nonsense! I'm a professional archaeology researcher from Snezhnaya. I swear. If I'm lying, may the Lord of Geo strike me down. So you are trying to get rich off archaeology. ये सही है. Oh, ये बंदा तब से by वही the कर रहा है. way, you probably don't want to sell that teacup. Oh? Why मेरा is that? मेरा वर्ल्ड ज्वाइन करो अभी ठीक हो गया है. ओके आओ. That's not an ancient teacup. It's part of Ningguang's collection. It must have fallen here along with the Jade Chamber. So unless you want to mess with the Qixing... Ah, I see. So I have a What a Wi-Fi. shame. Where can It I was of download such high quality, quality? too. With See, high clarity. you do इस want चैनल to पे sell एक these वीडियो है. objects. वो वाला देख लो. But, so what? Why can't I pursue wealth both Anyomi intellectual का एक and वीडियो है, material? देखो. Don't be so simple-minded. All right then. No need to stay here any longer. I'm rather quite intrigued by the God of Salt too, actually. Let's go to Saltarai next. एनियोमी वाला एक वीडियो है. वो वाला वीडियो देखो. पता चल जाएगा. ये वाला हाई क्लैरिटी में देख जाएगा. डाउनलोड भी कर पाओगे. सब कर पाओगे. मस्त है एकदम. और पिक किंग तुम्हारे वर्ल्ड में जाना था तो एंड कौन से हो तुम? कौन से हो तुम? मेरा थोड़ा ज्यादा ही फ्रेंड्स है. ओके मैं ओपन करता हूँ. अभी ओपन करोगे? करो 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 करो. नो प्रॉब्लम करो.
ओपन हो जाए तो बोलना, मैसेज करना, गेम में मैसेज करना मेरे को। यहाँ पे जाना है, यहाँ पे किस तरफ से जंप करके यहाँ पे, या फिर यहाँ से यहाँ, क्या बेटर है? ओपन हो रहा है मेरा वर्ल्ड। ओके ओके ठीक है। ब्लैक सैलोन नाम है मेरा। हाँ ये रहा, ओपन रिक्वेस्ट टू ज्वाइन भेज दिया। AR-35 है तुम्हारा, अच्छा है। एटलीस्ट बॉस फाइट कर पाऊंगा तुम्हारे साथ। इनाजुमा वाला वो वाला बॉस अगर ओपन होगा तुम्हारा, वो वाला फाइट करूंगा। ओके ब्रो, आई विल सी आफ्टर दिस लाइव स्ट्रीम। ओके ओके ठीक है। ये वाला गेम तुम अगर चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, मस्त गेम। क्यों मैंने हार्ड डिस्क से इसको SSD से इसको हार्ड डिस्क पे क्यों भेजा पता नहीं। पार्टी सेटअप मैं यूज करूंगा, बार बार तो यूज नहीं करना मेरे को, हीलर नहीं चाहिए मेरे। आ गया काजुमा, ये रहा काजुहा यही है, काजुमा नहीं। हील कर दे, नहीं कर पाएगा। इनाजुमा खुला है, अबे इनाजुमा नहीं खुला है। सही भी है, इनाजुमा तो क्वेस्ट से खुलता है। तो क्या करे वो तो आर्टिफैक्ट कोई बॉस और हाउ टू डाउनलोड इन PC एंड मोबाइल, मेक द वीडियो अबाउट इन दिस चैनल। इस गेम को डाउनलोड करने के लिए तुम गूगल पे जाओ, लिखो जेंसिंग इम्पैक्ट डाउनलोड, मिल जाएगा। और अगर ना मिले तो तुम लिखो कि एपिक गेम्स खोलो। I smell rabbit. एपिक गेम्स खोल के वहाँ से जो है डाउनलोड करो, एपिक गेम्स पे मिल जाएगा या फिर स्ट्रीम पे भी मिल जाएगा, दोनों पे मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बॉस फाइट करते हैं। ओके यहाँ जाओगे, फॉलो करूँगा। 5 की वॉचिंग भाई, क्या बात है। और 5 लोग चैट कहाँ कर रहे You हैं? leave, you call me. 5 लोग चैट कहाँ कर रहे हैं? चैट तो कर रहे हैं 1 2 3, मैं एक और हूँ 4 तो मिल गया। 5वां कौन है जो देख तो रहा है पर चैट नहीं कर रहा है? फ्री और पेड? फ्री ऑफ कोर्स फ्री। ये वाला बट 40 GB का है, बता रहा हूँ 40 GB का है। गेम का साइज 40 GB है। संभाल के डाउनलोड करना। पार्टी सेटअप, रुको अभी कूदना मत। रेजर किसी काम नहीं आएगा यहाँ पे। नहीं है, आपके साथ खेल रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं पड़ा है कि मैं आपके साथ खेल रहा। अबे व्हाट 40 GB? हाँ मोबाइल में अगर डाउनलोड करोगे तब 13 GB है, 13 GB। और अगर किसी में डाउनलोड करोगे तो 40 GB है।
मैं यूट्यूब और जिंसिंग इम्पैक्ट एक साथ चला रहा हूँ भाई, ये सब काम मत करो। Nice and spicy. Race you. तो झुकने दो झुकने दो झुकने दो झुकने। अबे जांगलिंग यूज करो, उसको झुकाओ पहले। Out of the frying pan, into the fire. चलो अब आ जाओ। बार बार यहाँ पे कौन यूज करता है? खत्म। Boba, get them. इस बॉस पे बार बार कौन यूज करता है बे? Race you. नॉट गुड एट ऑल। Nice. The wind knows. That hurts. चलो हो गया। मैं यूट्यूब ओके हाँ। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओ भाई उसका हेल्थ गया। I will play in BlueStack emulator because my Wi-Fi supports 50 Mbps. How can I download 40 GB quickly? BlueStack पे मत खेलो, BlueStack पे खेलोगे तो तुम्हारा पीसी जो है बूम हो जाएगा। उससे बढ़िया मैं जो बोल रहा हूँ वही करो। अच्छा तुम YouTube पे भी हो ना? मैं अगर बोलूँगा तो भी तो तुमको सुनाई देगा लॉल। ठीक है चलो 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 लीड 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 ले लो और उसके बाद लीड करो। लीड दी वे लीड दी वे। एपिक गेम से इसका लॉन्चर डाउनलोड करो, उसके बाद डाउनलोड में बैठा दो, स्ट्रीम देखो। 4 घंटे के अंदर डाउनलोड, 50 Mbps है तो 3 घंटे या फिर 3.5 घंटे के अंदर अंदर डाउनलोड हो जाएगा। एपिक अगर ब्लूस्टैक से खेलोगे तो तुम्हारा प्रॉब्लम होगा, लैग होगा, बहुत ज़्यादा लैग होगा। ये जो गेम एक्सपीरियंस है 60 FPS का एक्सपीरियंस है वो नहीं मिलेगा। It is the last link I have to the land of my birth. तो अब हार्ड वाला फाइट करते हैं। हार्ड वाला कौन सा? ओए ओए बो का कैरेक्टर नहीं है मेरे पास, माफ कर दे मेरे को, बो का कैरेक्टर नहीं है। अरे यार चलो चलो कोई नहीं, मेरे पास बो वाला कैरेक्टर नहीं है तो इसको कैसे मालूम है? चलेगा चलो। Time to go. बार बार यूज करो अपना, एक ही रखे हो यूज करो। तो कैन आई कम आफ्टर सम टाइम? ओके ओके। My PC come in 9 o'clock tomorrow in my school. I can't download tomorrow. I can't download now. What do I? क्या पता। रुक जाओ स्टार्ट मत करना। चलो स्टार्ट करो। Taking a stroll in the middle. An assassin from our homeland, or a fool फालतू है ये who वाला बॉस। trespasses upon the waters of Chingsa. Coveting the shapes of the living, pure water can take on many forms. In this way, shall water deliver your punishment. अरे वाटर पे वाटर वाले किस पे क्यों यूज कर रहे हो? बार बार वहाँ पे भी यूज करो। अबे कितना भागेगा रुक। The power of water is its ability to take I will try to any download in shape. 9. Okay. Do not use Barbada. डैमेज नहीं कर रहे हो तुम बिल्कुल भी। Without solid ground, terrestrial creatures become simply helpless.
power of water is its ability to take any shape. अरे भाग मत, इतना भागता है इसलिए तो पसंद नहीं आता ये वाला बॉल। Into the wind. One who is ignorant of water's भागो वहाँ से, भागो वहाँ treasure से। fails also to comprehend its horrors. One with nature. Clouds high. The birds come. Let's see what happens when you lose your foothold. I love you. अरे थैंक यू यार। संभाल के, अभी ये उड़ने वाला आएगा अभी। The power of water दिमाग is its ability to take any shape. उड़ने वाला देगा। ये दिया उड़ने वाला। Nice and spicy. We seek but a small haven of tranquil waters. Is that so much to ask for? As long as rain falls and rivers flow, water will exist forever. Next. I got my best friend because of SGSMP. कौन है? मेरे पास एक 5 स्टार तक नहीं है, एक भी 5 स्टार नहीं है। रीरोल कर लेते हैं यार, 5 स्टार मिल जाता है रीरोल अगर करो, पर अभी तो रीरोल करने का टाइम नहीं है यार। 35 पे पहुंच मिल जाएगा, फिक्र मत करो। इलेक्ट्रिक वाला रेजर चेंज करना पड़ेगा। वेट, ये इलेक्ट्रिक वाला पे मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मेरे पास रेजर है। इस तरफ से आया करो, वहाँ पे चढ़ना पड़ता है। कौन आता है वहाँ से? सेम टाइम पे पहुँचा देखो। तो बड़ी गाड़ी तू। हाँ मार ना। अभी देखता हूँ कितना है। हाँ बॉल स्ट्रीम करती स्ट्रीम। Time to go. स्ट्रीम में आए ना, सेकंड चैनल स्ट्रीम में आए। जिनसिंग हाँ কথা বুঝে যাচ্ছে না, তুমি আয় না मेरा लैग कर रहा है। अबे इसके अंदर घुसने दो मेरे को। गया। आजा जल्दी कहाँ गया? आजा। Falling leaves adorn my night. Into the wind.
अबे एक नंबर आ जानलिंगा। अबे यार देर कर दिया मैंने, थोड़ा सा देर कर दिया। कोई ना। अबे मेरे पीछे आना। हाँ इसके पीछे क्या जाता है, बच्चे के पीछे क्या जाता है। हाँ है कहाँ खत्म। और कुछ नेक्स्ट कौन सा बॉस? आई एम स्विचिंग माई डिवाइस टू टीवी, कांट चैट इन टीवी। ओके यार ओके। ये गेम पे उतना चैट करने का कुछ है ही नहीं, इसका स्टोरी मोड गेम है ना, तो अच्छा है। अबे चैट कहाँ गया? पूरा चैट गायब हो गया। वाओ यहाँ पे कौन सा वाला बॉस है बे? आ जा रहा है वो। रुइन गार्ड। अच्छा रुइन I गार्ड। don't like the rain. हालत खराब होगा गार्ड में, मेरा भी हालत खराब होगा। एक मिनट, थोड़ा सा हील कर लेने दो। बारवाड़ा यूज करो ना, बारवाड़ा तुम यूज करो, बारवाड़ा यूज करके हील करो मेरे को। चालू हो ले। One with nature. Eat this! खत्म। आओ बे। आओ। इन चीजें तो नहीं उठा रहे हो, कैसे चलेगा? There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. वाह उसने उठाया ही नहीं। इन जो उठाना था वही नहीं उठाया। अबे अपग्रेड मटेरियल तो उठा के जाते, नहीं चाहिए बोले उठा लेता हूँ मैं। I have a doubt, बोलो। This scenery is wonderful. पिंग इतना हाई Surely है। enough अच्छा to तुम convince स्ट्रीम पे anyone हो, to स्ट्रीम become के a साथ साथ इस wanderer. पे हो, इसकी वजह से पिंग हाई है। आ गए कहाँ? अच्छा फायर वाला बॉस, इसके लिए बाड़ बाड़ा लगेगा। Clear weather all around brightens the मैंने heart. उठाया लेकिन फ्री पिंग 300 प्लस था। अच्छा यू कैंट अर्न फ्रॉम दिस चैनल, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड स्ट्रीमिंग दिस चैनल? बिकॉज ये वाला जो गेम है, ये अगर मैं अपने उस चैनल पे स्ट्रीम भी करूँ और उस चैनल पे भी अगर मैं स्ट्रीम भी करूँ, फ़ायदा मेरा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे भी जो स्ट्रीम्स है वो तो ऑब्वियसली डिमोनेटाइज हो जा रही है। डिमोनेटाइज मतलब वहाँ पे कोई एड्स नहीं आएंगे, एड्स नहीं तो अर्निंग नहीं। और यहाँ पे मैं इसका मैं यहाँ पे स्ट्रीम कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं स्ट्रीम करूँगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है
ये जो चैनल है, ये जो चैनल है, इसका जो है थोड़ा बहुत ग्रोथ होगा। आज इस चैनल पे क्यों स्ट्रीम किए, वही बोला ना मैंने अभी, इसका भी थोड़ा बहुत ग्रोथ होगा। और ये अगर मैं उस चैनल पे स्ट्रीम भी करूँ तो कोई जो है देखेगा नहीं। There are leaves around, and I. Go, Barbara, go! उठाओ बे, ये सब चीजें उठाओ, एसेंशियल मटेरियल है ये सब, मटेरियल्स उठाओ। ये देखो Let the show begin. Huh. Yeah. Huh. नहीं हो रहा है पिंडी में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं तो इसके बाद से मैं छोड़ दूंगा। Then all game streams in this channel upload the video in the main channel. ये भी कर सकता हूँ, पर माइनक्राफ्ट का जो स्ट्रीम है वो उसी चैनल पे होगा, पर ये बाकी जो गेम्स मैं खेलूंगा उसका स्ट्रीम जो इस चैनल पे होगा, इससे बेटर होगा। क्या I'm hungry. Let's hunt. आपका FPS कितना है? मेरा FPS 60 FPS सेट किया है मैंने, पर 60 तो आता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 45-50 आ जाते हैं। के ऊपर से मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ तो और ज़्यादा FPS जो है घटेगा। मेरा FPS 31। तुमने शायद FPS सिलेक्ट नहीं किया है, हाई FPS सिलेक्ट नहीं किया है। हाई FPS सिलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद से होता है। मैक्स पे खेल रहा हूँ। अरे मैक्स पे नहीं खेलते कोई भाई, यही तो गलती कर रहे हो, यहीं पे तो गलती कर दे रहे हो। मैक्स पे कौन खेलता है? मैं जो सेटिंग्स बोल रहा हूँ उस सेटिंग्स पे खेलो, ये वाला सेटिंग्स पे खेलो। ग्राफिक्स पे जाओ, ग्राफिक्स पे जाने के बाद जो FPS है उसको 60 कर दो, और जो ग्राफिक्स क्वालिटी है उसको जो है लो पे करो। ग्राफिक्स क्वालिटी लो पे करो और जो FPS है उसको 60 करो, उसके बाद देखो परफॉर्मेंस अच्छे से चलेगा एकदम। ये फिर से कुछ नहीं उठाया, चलो मैंने नहीं उठा लिया। अगर डैमेज मार्क्स ना हो तो डैमेज मार्क्स उठा रहा हूँ मैं, कुछ सोचना डैमेज मार्क्स मुझे।
सामने एक और बॉस है वैसे। लो ग्राफिक्स, हाँ लो ग्राफिक्स करो और एफपीएस को अब लो कर दिया। तो यू मेड अ बिग मिस्टेक इन योर पीसी। व्हाट? क्या क्या मिस्टेक किया? Protect us. बोलो क्या मिस्टेक कर दिया मैंने? क्या यार तुम मेरे को फ्रोजन कर दे रहे हो? बारवाड़ा यहाँ पे यूज कर रहे हो तो मैं फ्रोज हो जा रहा हूँ। आइस पे कौन बारवाड़ा यूज करता है? वहाँ पे चेस्ट है, यहाँ पे और स्लाइम का पार्ट्स है। ट्रांगलिंग का यूज करो, जाएगा। रुको मैं कर देता हूँ। रुको रुको कर देता हूँ मैं। Out of the frying pan, into the fire. क्या हो रहा है? You're toast. चलो मिल गया। यहाँ पे भी है। Ryzen 5 5600G Now I in got stomach cramps. 16,000 but you अबे वो मिल नहीं रहा था, अवेलेबल नहीं था। अवेलेबल नहीं था वो। अगर अवेलेबल होता तो मैं ले लेता ना, वो अवेलेबल नहीं। Let the show begin. तुम्हारे पास एसेंस लेफ्ट है? Amazon is showing two piece only left. तुम लोग तुम्हारे वहाँ पे 2 पीस लेफ्ट है, हम लोग यहाँ पे नहीं। हम लोग के यहाँ पे कुछ था ही नहीं, बचा ही नहीं था। अच्छा एसेंस भी नहीं बचा, तब बोलो ना पहले। अब क्या फायदा? अब बॉस से फाइट का फायदा क्या? वर्ल्ड क्वेस्ट करते हैं। वर्ल्ड क्वेस्ट मल्टीप्लेयर पे नहीं हो सकता यार। चलो मेरा एक और दोस्त है, उसके वर्ल्ड में जाते हैं। आ जाओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ उसके वर्ल्ड। ठीक है, मैं कोऑप में अभी घुसूंगा, उसके वर्ल्ड में आ जाना। स्ट्रीम कब तक होगा? अभी तो जस्ट शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बोल सकते हो। La da 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 da.
Everyone is working super hard. We should be too. I wonder when I'll be दोस्त as के वर्ल्ड में tall as कैसे my आऊँ? अरे big मेरे को फॉलो sister. करो, मेरे को फॉलो करो। देखो मैं ज्वाइन करूंगा, उसके बाद तुमको मेरे मेरे वर्ल्ड में उस पे जो है ज्वाइन का दिखा देगा। या तो मैं आईडी भेज रहा हूँ, उसका आईडी भेज रहा हूँ, उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो और उसके बाद आ जाओ। Shame. Didn't. Ugh. How can I smash all these training? Shame. Ugh. How can I smash all these training dummies at? Huh. So that's how to do it. I'm impressed. दोस्त की आईडी ये लो। कहाँ गया? ये रहा। चेक इन्फॉर्मेशन, उसका आईडी है ये रहा, ये वाला 8628088610, ये वाला। Gale Blade! Oh, it seems I can't do it. मैंने उसको बता दिया है, तुम भेजो, वो एक्सेप्ट कर लेगा। I smell rabbit. Let's cook something. I keep हेल्थ watch. बढ़ाने वाला You ये leave, है, you call me. बट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाता है। रिजनरेट, अच्छा ये पर सेकंड भी बढ़ाता है, ये वाला ही बनाना है। और बड़ा से है ऑटो को 6 नहीं 30 एनफ है। से बारबड़ा से तो कुछ तो एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा, 3 एक्स्ट्रा मिले। और इससे रिवाइव होता है, ये तो कैरेक्टर रिवाइवल है। न्यू रेसिपी भी है, कुछ ही राइस केक्स, ये वाला से अटैक बढ़ता है। क्या चाहिए? ये वाला चाहिए। I'm hungry. Let's hunt. Hey, how about we go for a nice meal sometime? My treat, of course. मैंने बोला उसको एक्सेप्ट करने को, ये देखो फिर से बोला एक्सेप्ट करो। It's been getting quite busy recently. मेरा भी स्पिन हो सकता है, पर मेरे को अभी भी चाहिए, थोड़ा सा ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। कितना प्राइमो चाहिए? अभी 500 प्राइमो चाहिए, उसके बाद मैं भी कर पाऊँगा। I keep watch. You leave, you call me. It's been getting quite busy recently. Hannah, I will make you better. It's been getting quite busy
কারটা করব হোয়াট Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. ये इतना टेंस कब से बन गया ये बंदा मारना पड़ेगा इसको तो मारो तो नहीं मारना है तो नहीं मारना था तो मारना है मारो 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 थोड़ी सी उठा के ओके कर लिया है देखो देखो आप ज्वाइन हो सकते हो Come take a look. There will कर definitely be something लिया that catches है your eye. आ जाओ Today's recommendation is the steak. चलो आ रहा है Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfenham. Fire it up! The neighboring nation ओए of Liyue एडे बाप has पे the most बच्चा prosperous commercial port in all of Tibet. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. लेट्स The गो neighboring nation of Liyue has the most prosperous commercial port in all of Tibet. All I can think about is Lulu. Where? I don't know. Let's fight some boss one more time, once more. ये तो उल्फ पे जा रहा है, उल्फ वाले पे जा रहा है. ओ स्ट्रीम पे मैंने देखा ही नहीं, स्ट्रीम पे क्या चल रहा है? 2 की वाचिंग, ओके अच्छी बात है. ये उल्फ वाले पे ही आ रहा है ना? हाँ उल्फ वाले पे ही आ रहा है. अबे गिर गया नीचे. कोई ना चलता है. Keep back! Check this out! Oh!
ओए 3 नंबर क्या कर रहे हो? हीलिंग करो। कार्ड वाला लेके वो पर हील नहीं कर रहे हो, कैसा चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा? खत्म 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 खत्म, बोला था खत्म। ले सकता हूँ? ले लूँ क्या? नहीं। वैसे लेके ही देखता हूँ क्या मिलता है। पता है बहुत घटिया रिसोर्सेज मिलेगा, लेवल उसका कम था, पता था घटिया रिसोर्सेज का। I wonder when I'll be as tall as my big sister. मेरे वर्ल्ड में अगर इससे फाइट करता तो मेरा जो मिलता है रिसोर्सेज मिलता है ये उससे बहुत कम है। ये नहीं क्लेम करना चाहिए था। कौन से वाले बॉस पे गया? आई थिंक ये वो पानी वाले पे जा रहा है। जीजीपी हाय, जीजीपी कैसे हो? तब क्यों नहीं आए थे सुबह को जब स्ट्रीम किया उस चैनल पे? तब क्यों नहीं आए? 5 की वाचिंग मेरे को 0 की दिखा रही है। वैसे मेरे को हर टाइम ही तो 0 की दिखाती है। वहां पे पहुंचना पड़ेगा मेरे को, नहीं तो ये मरेगा। हे सुब्रायन भैया कैसे हो? चढ़ते चढ़ते ही तो मेरा हेल्थ खत्म हो जाएगा, मतलब हेल्थ बोल रहा हूँ इसको, क्या कहते हैं इसको, ये खत्म हो जाएगा मेरा सिर्फ चढ़ते चढ़ते। चढ़ने दो, चढ़ने दो, कितना चढ़ सकता है चढ़ने दो। स्कूल जाना था आज नहीं गया। ओ भाई ये सब अच्छी बात नहीं है। वैसे ये लोग नीचे क्या कर रहे हैं? ऊपर आना है। बॉस फाइट के नाम पे ये लोग क्या कर रहे हैं? मैं तो पहुंच भी गया, ये लोग कोई नहीं पहुंचा। मैं पहुंच गया, ये लोग नहीं पहुंचे।
गेम का नाम क्या है? गेम का नाम है जिनसिंग इम्पैक्ट। तब से मेरे को खड़ा करके रखा है यहाँ पे, मेरे को खड़ा कर दिया इन लोगों ने पूरा। तब से मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, खुद की तरफ देखे जा रहा हूँ खड़ा होके। हार्ड है ये फाइट, तुम कर लो। मैं मर गया, मैं मर गया। अरे ठीक है मैं कर लूँगा, तुम पहले यहाँ पे आओ तो। प्लेयर 1 आएगा, उसके बाद फाइट स्टार्ट करेगा, उसके बाद ना कुछ होगा। अगर वो फ्लाइट ही नहीं स्टार्ट करेगा तो कुछ नहीं होगा। मैं इसको स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, ये वाला प्लेयर 1 ही स्टार्ट कर पाएगा। तुम दूर से हील करो, तुम दूर से हील करो। An assassin from our homeland, or a fool who trespasses upon the waters of Chinsa. Coveting the shapes of the living, pure water can take on many forms. In this way, shall water deliver your punishment. The power of water is its ability to take any shape. Without solid ground, terrestrial creatures become simply helpless. The power of water is its ability to take any shape. One who is ignorant of water's treasures fails also to comprehend its horrors. Let's see what happens when you lose your foothold. The power of water is its ability to take any shape. I taste blood. We seek but a small haven of tranquil waters. Is that so much to ask for? As long as rain falls and rivers flow, water will exist forever. I smell rabbit. किंग, अगर तुम भी डिस्कॉर्ड में आना चाहते हो तो आ सकते हो।
I keep watch. You leave, you call me. ओके, मैं डिस्कॉर्ड पे हूँ। कौन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा मेरे को? एक्सेप्टेड। I'm hungry. Let's hunt. यार मेरा वाला अकाउंट 1 मंथ पुराना बनाया, अब मैं लेवल 35 कर लिया। अरे नाइस नाइस। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलो। क्या हुआ तब? अरे वो गेम क्रैश हो गया। तब रैम अपग्रेड करना पड़ेगा, तुमको कुछ नहीं कर सकते। हाँ हाँ देखो कर लो रैम हाँ। अपग्रेड। करूँगा करूँगा हाँ करूँगा। कल तो एग्जाम है। कल कॉलेज का? कॉलेज का नहीं है, जेई। अच्छा तुम लोग ही तो हो, तुम लोग ही तो हो जो लोग जेई भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पिंग हाई मैं है पढ़ रहा किसका? हूँ। क्या पता किसका पिंग हाई है। क्या? अच्छा मेरा पिंग नहीं 140 है, तो मेरा पिंग हाई नहीं है। तो क्या है? अरे स्ट्रीम कर रहा हूँ ना, तो उस पे मैसेज। मेरा भी, हाँ मेरा भी पिंग हाई है। मेरा 140 के करीब पिंग है, देखो 140 हाई नहीं है वो। डिस्कॉर्ड में रहने से बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, मैं निकलता हूँ डिस्कॉर्ड से। एयरटेल है किसका? मेरा? अच्छा तुम्हारा पिंग हाई है ये बोलो ना, तुम्हारा पिंग हाई है ये बोलो ना। मेरे को लगा मेरे पिंग की बात कर रहे हो। मेरा पिंग तो फाइन है, एकदम अच्छा है। है बॉल है ডিসকর্ডে আমি বেরিয়ে গেলাম। হ্যাঁ তখন আমি ছিলাম, আমি ছিলাম অ্যানোনামাস ছিলাম, আমি বেরিয়ে গেলাম। আমার ল্যাগ করছে, গেমে বহুত ল্যাগ করছে, তাই না বেরিয়ে গেলাম। দেখি আমিও এখানে একটা কোয়েস্টে ঢুকে I গেলাম heard ভুল that করে। Salterai was once the home of the god of Salt's people. Therefore, there's sure to be ঠিক আছে, তুই loads of level up কর না, valuable আমি relics আসছি তারপর। nearby. इसमें आप प्रो एग्जिट क्यों किए? एग्जिट किया मेरे को लगा कि करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे खेल के उतना क्या फ़ायदा है। क्या मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, मैं थोड़ा बहुत स्टोरी कंप्लीट कर लेता उससे अच्छा। According to legend, the people of the तुम god भी of थोड़ा बहुत Salt, स्टोरी कंप्लीट कर लो। Havri, enjoyed prosperous lives under her protection. But this legend has been around for ages. With the countless scrap collectors and treasure hoarders in the area, there probably aren't many valuable things left here. Oh, good. That's just great. If I knew it was picked this clean before, I wouldn't have come. About that, I know there's a ruin deep in this cave here. It's related to the god of Salt, which is actually how the तुम area साथ में खेल रहे हो? originally हाँ got its मेरे name of साथ में खेल रहा था। Salterai. However, the ruin entrance has been sealed by a mysterious power. Nobody has been able to break the seal.
I found a mechanism that seemed to be related to the seal, but when I undid the mechanism, the seal wasn't affected at all. So at the moment, the seal's origin and how to break it are very important topics in my research on the God of Salt. I don't know, there's no concrete evidence, but I'm pretty sure the seal is meant to hide some kind of long-forgotten truth. The God of Salt was a benevolent god, adored by the people, not to mention powerful. She wouldn't have any kind of shameful secrets to hide. मैं गेम बंद कर दिया, मैं So, stream- the one who Okay. wants to hide some truth is very possibly her killer, Morax. This doesn't sound like something the Lord of Geo would do, though. Who Dongli के cares सामने about all उसका- that? It sounds like countless treasures of the God of Salt lie within this ruin, just waiting for someone to find them, right? You weren't listening at all, were you? Ugh. Even if there's a mountain of treasures inside, nobody back. can get Welcome in back. if the seal isn't broken. Ah, but we have the illustrious Mr. Zhongli with us. He looks like he knows just about everything. A little seal shouldn't be any trouble for him. This seal seems to be quite ancient. Even Mr. Zhongli may not know all of its secrets. I may know something about it. सील कैच किया था, वही गॉड है। Over the years, I've heard various rumors with bits of knowledge about क्या प्रो seals. हो, ये तो बोल सकते। Although their references seem rather disorderly, they do in fact contain the secret to breaking seals. Let's go take a look at the mechanism Miss Wanyan just mentioned. Okay, since Mr. Zhongli says so, follow me then. बंदा खतरनाक है जोंगली। ये जियो वाला गॉड है, जियो का जो गॉड है वो, और ऐसा प्रिटेंड करता है कि जियो गॉड तो मर गया और वो तो गॉड है ही नहीं, वो एक नॉर्मल आदमी है। इल्जाम उसके ऊपर लग रहा है, तो पता है कि उसके ऊपर ही इल्जाम लग रहा है, तो प्रिटेंड करना है गॉड है ही। कौन सा इल्जाम? ओ भाई Clouds high. The birds come. Nova, get the... Ready, steady, go! I'll protect us. The wind knows it. I'm the frying pan, into the fire! One with nature. मेरे साथ माइनक्राफ्ट में पीपी करो। हाँ करूँगा बाद में करूँ, बाद में कभी करूँगा। अभी आज कोई स्ट्रीम पे आया नहीं, इसलिए मैं माइनक्राफ्ट छोड़ दिया। माइनक्राफ्ट छोड़ दिया। The wind knows it. ब्लॉक करके दिखा रहा। बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रहा। अबे डायरेक्ट फ्रीज। माइनक्राफ्ट Here it खेलो, is. माइनक्राफ्ट रात There's को। some debris scattered here that, when put together, look like they definitely had to do with the God of Salt. According to the inscription on the side, if one looks from a certain angle, the secret to the mechanism will be revealed. हाँ कैसी बोला था मैंने। See that? Although we activated the mechanism, nothing happened to the seal. That's because there's Impact actually Factory- another mechanism that must be आ गया। activated. अब से जिनसिंग पर कसरी विषय आ गया। Another? Let me lead the way from here. आप एक Nice and spicy! और होना चाहिए। भैया अब क्या This आवाज place अच्छे से seems नहीं आ रहा है। familiar. अब देखो। I remember. I think there's some elemental monuments here. So you're saying they're related to all this?
When I investigated the seal last time, अब I आवाज आ had रही है someone with a सभी से? vision accompany me. But when we lit up all the elemental monuments, nothing happened. That's because you don't just need to activate them at the same time, but in a certain order as well. Otherwise, the seal will not be broken. The secret to this puzzle is hidden in the legends about the Archon War. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, ठीक है. Qingce in the north. All desolate and devoid of life. South, east, west, Liyue north. is vast, yet even one haven is hard to find. To the north, to the east. Do the people of Liyue always talk in riddles? I think I've heard this saying before. Certainly you have. And the contents of this saying are also related to the god of salt. To provide a haven for her people, whose lives had been ravaged by the Archon War, this benevolent god searched all across Liyue. At that time, with the chaotic fires of war engulfing the land, even one sliver of peace was a luxury. And that haven she eventually found is right here. Today, it is known as Sal Turai. How sad then. In the end, this peaceful place was destroyed by Morax. Wow, wow, wow. Okay, enough घूम with these फिर के ancient इसके ऊपर ही आ जाता stories. Now that we have the clue, hurry up and break the seal. Whatever happened doesn't matter as long as we can get inside that ruin. और इसको तो सिर्फ Tianheng पैसे in से the मतलब है. south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingce in the north. With this clue, you should be able to solve the puzzle. माइनक्राफ्ट में आओ ना. माइनक्राफ्ट में सुबह को मैं आया था, कोई नहीं आया तो मैं निकल गया. अभी मैं फिर से शाम को आऊंगा. माइनक्राफ्ट दूसरे चैनल पे आएगा. इस चैनल पे एनिमे का वीडियोस और जिनसिंग इम्पैक्ट का होगा. जिनसिंग इम्पैक्ट की क्यों? एनिमे रिलेटेड मुझे और सारे गेम पता है. सब आएंगे इस चैनल पे. Strange. ओके, सबसे पहले था साउथ. साउथ कौन सा डायरेक्शन है? एक मिनट. अदर्स मैप फिक्स्ड ऑलवेज नॉर्थ अप. तब उसका मतलब नॉर्थ होगा ये. इसका मतलब साउथ है ये. इस तरफ जो है ये वाला. के बाद ये वाला. के बाद ये वाला. एंड लास्ट वाला. वेट, एक और कहाँ गया? ओड़ा साइड होना चाहिए. व्हाट? एक और कहाँ गया? गलती कर दिया मैंने आई थिंक. ओह, यहाँ पे था. Tianheng in the south, Yaoguang South, in the east, east, Jueyun in west, the west, north. Qingce in the South, north. east, The directions west, are the north. clue. Give it another try. साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ. मतलब ये इस तरफ वाला सबसे लास्ट में. ये वाला सबसे लास्ट में. इस तरफ जो है वो सबसे पहले. ये वाला सबसे पहले. साउथ, ईस्ट, यहाँ वाला. यहाँ इस तरफ जो है इस तरफ एक होना चाहिए. ये रहा. वेस्ट, नॉर्थ. Tianheng in the south,
Yaoguang ईस्ट in the वेस्ट गलत east, कर दिया मैंने. Jueyun in the west, Qingze in the north. The directions are the clue. Give it another try. आई नो मैंने डायरेक्शन गलत कर दिया होगा. ये एक यहाँ पे ईस्ट वेस्ट में गलती किया होगा मैंने. ईस्ट वेस्ट ये वाला तो नॉर्थ है. मैंने फिर से गलती कर दिया. वो वाला पहले था, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला और लास्ट में ये वाला. डिस्ट्रिक्ट वाले और कौन से कैरेक्टर हैं मेरे पास? डिस्ट्रिक्ट वाले और कौन से कैरेक्टर हैं मेरे पास? लेट मी. बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. ये है किचिंग. Something's come up? करो इससे. I trust you. आई डोंट ट्रस्ट यू. फिर ये मैं एक काम करता हूँ. Speed of light. Don't blink. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingze in the north. The directions are the clue. Give it another try. What a bountiful harvest. ओके दैट्स नॉर्थ. मतलब दैट्स साउथ, दैट्स ईस्ट, दैट्स वेस्ट, या फिर उल्टा. नॉर्थ साउथ में जाऊँ पहले. हो गया साउथ, ईस्ट और वेस्ट. ये वाला ईस्ट, Incoming. ये वाला वेस्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट नॉर्थ. हो गया हो गया हो गया. हो गया. The seal really was broken. Mr. Zhongli is indeed quite remarkable. It was nothing, really. Now, it's time that people learn the hidden truth lost to time. जोंगली ये सब कर रहा है अपना नाम को क्लियर करने के लिए. उसके नाम पे इल्ज़ाम लगाया है कि उसने मारा है उसको, बट अभी ट्रूथ बाहर आएगा कि उसने नहीं मारा है. सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो सॉल्ट का जो गॉड है वो इविल हो. Before entering the ruin, I have a proposal that will help us prevent the kind of senseless arguing between you two that we saw at Guyonstone Forest. Okay. What is it? I propose you two agree upon a contract, stipulating that we alternate who gets claim to each treasure we encounter, with only one object permitted per claim. To show my sincerity, I won't be taking any treasure. This will just be between you all. Hey! Don't pass an opportunity like this up so easily! I don't That's agree. Paimon. I mean, you want me to split the treasure with this amateur archaeologist? No, absolutely not. I don't agree either.
He will only defile the precious relics left behind by the god of salt. I can't accept this. Well then, if the contract is not agreed upon, I will no longer serve as your consultant on this expedition. You will have to rely on your own experience to find whatever treasures are hidden in this ruin, as well as traps. You have the audacity to demand this. Okay then. Even half of the treasure in the long-sealed ruin of the God of Salt should be enough to make a fortune. If you want me to agree upon this contract, so be it. I just have one request, Mr. Zhongli. If we discover the truth behind the God of Salt, you must judge it fairly, even if the truth harms Morax's image. I can accept this arrangement. Well then, let's go. अंडरग्राउंड जाना है अभी। यहाँ पे कितने अंडरग्राउंड जगह है और मैप को फिक्स करना है। मेरे को रोटेटिंग ही पसंद है और पार्टी भी चेंज करना था। काजुआ काजुआ काजुआ। All right, let's head off. बड़ा I'll take care of it. The mist of mysterious and salt. The seal has been broken, and the tale of God of Salt awaits with the party push armed. Recommended element: no geo in the party. Elements. बार को तो नहीं हटा सकता। फायर इसको ज़ांगलिंग को हटा के ले लेता हूँ। As you wish. एक काम करता हूँ, ज़ांगलिंग को रहने देता हूँ, बारबरा को हटा के दैट इज नोबेल। नोबेल कहाँ गई? ये रहा। I can't wait any longer. As you wish. स्टार्ट। नोबेल हीलिंग भी कर देता है तो काम आ जाएगा। 4 की वाचिंग, नाइस। अबे ज़ोंगलिंग तो दे ही रहा था, मैं क्यों लेके आ गया इसको? बेकार लेके आ गया मैं। Are these statues? No. These are people. Duh. They were probably followers of the God of Salt. How did they become this way? What in the world is hidden deep in this ruin? The God of Salt I think evil था। यार आईपी नहीं जा रहा है। What? I am GGP। चलूं कैसे यहाँ पे? इतना खतरनाक, ऐसे करके चढ़ना पड़ेगा अभी। अबे गलत लगा दिया। फिर से वेट करो, फिर से वेट करना पड़ेगा। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आईपी नहीं मिल रहा। आई थिंक यूट्यूब ब्लॉक कर दे रहा है। आई थिंक यूट्यूब ब्लॉक कर रहा है। Solidify!
अबे मेरे को चढ़ने दे रे। Gather. सही है। God of salt. Look at this. It's filled halfway with salt. Oh, it just looks like a fancy salt holder. Seems like the god of salt was a god lacking in treasures. According to my knowledge, it's no ordinary vessel. Although it is only half full, it is also forever half full. That is to say, it is bottomless. What? You're saying that even if I pour the salt out, the amount inside won't change? Exactly. Able to produce endless salt. The god of salt is powerful indeed. Finally, after all that effort, I've found precious treasure. I claim this as mine. I just need to pour the endless salt into 1,000 or 10,000 bags. I can sell it and make a fortune. Hey, how can you use a relic of the god of salt for such a shallow pursuit? If Mr. Clement wants this salt chalice, then the next object we find will belong to Miss Wanyan, according to the contract agreed upon. Of course, as we agreed. But how can anything be worth more than this rare find? Since we have a contract, it's no use for me to fight with him. Then let's move on, shall we? Stabilize! I must leave no stone unturned. One with nature. As one with wind and cloud. Stay focused. Stabilize! Just a simple ruler. It doesn't look to be worth anything. This, if I remember correctly, this is some kind of measuring tool. Indeed. But the god of salt imbued it with another power. When you stick this ruler in the ground, the surrounding area will become covered in salt, much like a rising tide covers the earth. The deeper it is stuck in the ground, the more salt will appear. It is essentially a bumper harvest of salt. What? That's even better than the salt chalice! Well then, according to our contract, the salt ruler goes to Miss Wanyan. No, unacceptable. I paid for and organized this entire expedition. Why should I get the short end of the stick? And this girl has been useless! Why would she get anything? Oh boy, here we go again. पीने कब आएगा? तो यहीं पे सवाल पूछ लो, मैं आंसर दे देता हूँ.
So you are saying you want to break the contract? So what if I break it? Now that I've seen how the mechanisms in this ruin work, I no longer need you. Let's not forget who hired who here. Why should I let you make the rules? Because you agreed to a contract. Rex Lapis once said, "Ones who break their contracts shall suffer the wrath of the rock." That is one of your Liyue gods. I am from Snezhnaya. I will suffer the wrath of the rock. You may find it rather unpleasant. Pay your dues. Solidify. I will have order. Into the wind. The wind knows me. You can't run from death. I shall confiscate your treasure as well. You are not worthy to continue any further into the ruin. Leave this place. Oh, darn you! Just you wait. Some archaeological survey. He could only pretend for so long. Yeah, good thing Paimon can smell a liar from a mile away. Clement's wrongdoing stemmed from greed, yes. But besides greed, there are many other things that may tempt us to break contracts. When people see the object of their dreams, how many are really able to control their desire and follow the contract? I think we should be honest with each other now. Huh? Be honest about what? That in truth, not a single member of this archaeological expedition came here for archaeology. Why do you say that? Miss, you lack even the most basic archaeological knowledge, and can recognize naught but a few simple relics. However, you are an expert when it comes to anything regarding the god of salt. You aren't interested in archaeology or relics. What you're really interested in is the god of salt. I believe those legends about the god of salt that you mentioned on the Pearl Galley are passed down between generations at Yinyuan Hall. Okay, that's enough. Sir, you are indeed a man of great knowledge and talents. I seem to have been right to seek you out once I plucked up my courage. You're right. I'm not a scholar of archaeology. I come from one of the 8 trades under the jurisdiction of the Qixing, Yinyuan Hall of the salt industry. Our ancestors were those protected by the god of salt all those years ago, when the Archon War engulfed the land in chaos. I never explained. I heard you call Lord up. Oh, right! Now that you mention it, the people of Liyue very seldom use the name Morax. During the war, Morax assassinated our god out of envy for her power. He left us alone and lost in the world. We hate him! But this is Morax's Liyue after all. And its history is written as he wishes. So I seek proof of Morax's guilt. He has blood on his hands and cruelty in his heart. Answer दोगे? दे तो दिया answer. We agreed to a contract that we will face the truth head on, didn't we, Mr. Zhongli? You must judge this history fairly. Naturally, of course. But I must add, Morax को पूछ रहा है, Liyue Morax को is सजा no देने। longer Morax's Liyue. Come with me. All the answers you seek lie ahead. यही तो है Morax। तो बोल रहा है भाई मनीष।
कैसे जाऊँ? ऐसे जाकर ना जा पाऊँ तो मेरे को आंसर चाहिए चाहिए चाहिए। कैसे जाऊँ वहाँ पे? अच्छा इसके ऊपर से चढ़ के Stabilize! Nice and spicy. Into the wind. Solidify! Out of the frying pan, into the fire. Crumble! Order guide you! Fallen leaves, adorn my night! खत्म। This is a sword? Aha! It's a broken sword! This is proof! This proves that the God of Salt had to fight back against the evil Morax. But sadly, she was defeated. The power of this sword surely is much greater than that of the Salt Chalice and Salt Ruler. 287 If we can repair the sword, then we can show the world the mighty power of the God of Salt. It does look like something left behind after being defeated in battle. 2 pieces of a broken sword. From an archaeological perspective, these are 2 separate relics. According to the contract, you can only claim one. Why? We were alternating claims to treasure, true. But Clement is no longer here. Yes, but the only one object per claim clause still holds true. You cannot take 2 relics at the same time. This logic! Zhongli, she seems like a good person, and no one is fighting over the treasure. How about you let this one slide, huh? When there's a contract, nothing can be allowed to slide. If the contract is not followed, then it is broken. No! If I only take 1/2, then it can't be repaired, and the power of the God of Salt cannot be restored. No matter what, I must be faithful to her. Even if it breaks the contract, I don't care. So you are already decided? Then there is a price to pay for breaking the contract. Zhongli! That is to say, you consign yourself to suffer the wrath of the rock. That's okay. The God of Salt gave up her life to protect her people. My sacrifice is nothing compared to that. Punish me however you want. Just let me take this proof of my faith. No, you can't hit her! Perhaps that punishment would be easier for her. But as punishment, I will tell you the truth. Huh? The truth? You mean the truth is my punishment? Yes. The truth that I am about to tell you shall be your price to pay for breaking the contract. I'm afraid to say that the God of Salt, Havria, was not the powerful god you imagine her to be. Rather, she was a small and weak god who yielded to all other gods. When it came to war, she lost, never able to win a seat among the 7.
What? During the Archon War, the gods of this world used all their strength and cunning to vie for control of Teyvat. But Havria instead chose to flee. She thought that by giving up before a fight could start, she could save herself and her people from the war. However, during such a long war, there is no end to the advances of aggressors. After making countless concessions, Havria lost all of her lands, until only one small haven remained. No. No! It can't be so. In her last days, she had not even a single blade to defend her people with. Not even a single blade? Then... this sword... This sword is not a relic belonging to the god of Salt, but is instead the murder weapon used to kill her. Murder weapon? No! That's not true! That can't be true! You're trying to test my faith in the god of Salt. As I said before, I only state the facts. Preposterous! You are a follower of Morax! Don't try to trick me! Hey! Hey! Come back! कोई मोड नहीं है ना नाइटबॉट. मॉडरेटर मैं खुद हूँ. It is a punishment after all. I did not want to tell her such cruel facts, but the contract was broken. Let's follow her deeper into the ruin. There, I fear, we will find something that will leave her no choice but to face the truth. I am the future moderator. अगर यहाँ पे रोज लेगुडल कुछ हो और अगर तुम इधर आए तो हो सकता है आ जाना इस तरह. Are these statue thingies running? What will we find ahead? Salt and betrayal. क्या हो गया? What are all these? What did they see? What did they do? What happened? Since you do not trust me, let us continue onward. That which lies beyond this door will show you all that happened back then. हील कर लो. हील हो जाएगा. क्या हुआ था? Round 0. This is the scene of the crime. Havria's body dissipated, leaving nothing but these traces of salt. Her dying moments have since been frozen in time to this very day. The story continues that some among her people realized at last that this gentle, kind, but weak god could never protect anyone in wartime.
The Archon War was cruel in the extreme. Instead of consigning her to the agony of defeat, they thought perhaps it would be better to give her a quick release. अच्छा, उसी के लोगों ने उसको मार डाला। What about these statue thingies? No matter how weak the god, the power that flows forth when they are slain is beyond the strength of mortal coils to bear. Those who could not flee were thus transformed. Those of her people who were untouched by this disaster left for Liyue, where they sought refuge with Rex Lapis. Their descendants feared Havria's remnants Best anime game and lived in terror खाना खाने that जा रहा she हूँ। had Okay, laid okay. upon them an eternal अभी curse. इससे So they risked their lives last to come here, last question. to break the sword, and offer up obeisances in hopes that her anger might be appeased. But they need not have done so. For how could a god who had never once resisted, Brian even भैया, till the hello. end, हाँ बोलो ना। nurse hatred for her people in her heart? Even if this is so, I can't! This must be a lie. A false history, all of it! Don't you dare try to shake my faith! क्या मतलब Yikes. हंसी खुशी से एकदम डार्क Xiangli टर्न ले didn't show लिया। any mercy this time either. Super dark. This is the price she must pay. Yet I would not call it a bad thing. Judging by how she appeared, I fear that she will struggle for a time. But even if she may not escape that struggle immediately, simply recognizing the truth is good enough for now. Indeed, in ages past, Havria's story served as a warning to me as well. Faith in a god who has already passed will do you no good. So it is for Havria. And so it is for Morax also. All right then. हाँ क्योंकि ये भी तो मर ही चुका है ना लोगों के हिसाब से ये भी Would you like to accompany me in taking a trip to Guyonstone Forest? Huh? What do you want to do, Zhongli? Treading old ground, telling old stories. One cannot help but be reminded of old acquaintances. खत्म क्वेस्ट का रिवॉर्ड और उठाओ और भागो यहाँ से। चलो कोई ना लंबा वाला स्ट्रीम हो गया एकदम ठीक है कोई ना निकलते हैं अब निकलने का टाइम आ गया शाम को फिर से स्ट्रीम 7 बजे के आसपास होगा स्ट्रीम आई थिंक चैनल पे माइनक्राफ्ट का बाय बाय